हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी एम्बिशन। तो आज आपण मानक मु कहबी जे सीपीईटी 2022 रे जो होबा को जाउची आपणकर ता पूर्व आपन को जानी रखिबा जरूरी जे आपणकर 2020 एवं 2021 रे जो सीपीईटी एंट्रेंस टी होइथिला तार केउ भली भाबरे एवं केउ पैटर्न रे आपणकर क्वेश्चन गुडी को आस्थिला एवं तार आंसर की गुडी को मध्य आसी जानिबा जरूरी काहे कि ना आपणकर साधारणतः सीपीईटी रे आपणकर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस गुडी को पकोउची तो आपण ताहा निश्चित भाबरे देखिबा जरूरी एवं क्वेश्चन रो आंसर गुडी को जानिबा जरूरी। तो मु सेहि थि आपण मानक पई एई भिडियोटी नै आछि जो माने भी सीपीईटी 2022 रे पार्टिसिपेट करिवे। तो आपण को प्री प्लानिंग आपण करबा उचित जे आपण केउ भरी भाबरे पढिबे कोन सब्जेक्ट रही छि आपणकर एंट्रेंस टी देबे। तो आपण ता पूर्व ए वीडियो टू देखंतु जो थरे कि म आपणकर पॉलिटिकल साइंस रे आपणकर बोथ 2020 एंड 2021 लो क्वेश्चंस एवं आंसर की दुईटी जाक देकिना आछि। तो आपण ए वीडियोटी को फुल देखंतु एवं भलो लागिथिले लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करबा को आदौ भूलिबे नाही। तो चलंतु वीडियोटी की स्टार्ट करबा। तो आपणकर क्वेश्चन पैटर्न टू देखंतु आपणकर प्रथमे जो क्वेश्चन टी आसीबो आपणकर एंट्रेंस हॉल रे आपण बसले देखिबा आपणकर ऊपर थिबो कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट एठार रही छि आपणकर 2020 तो सेठार आपणकर थिबो 2022 देन आपणकर एठारे टेस्ट बुकलेट नंबर देन आपणकर एठारे सब सब्जेक्ट कोड रहितबो आपणकर पॉलिटिकल साइंस रो रहूची 48 तो अलगा सब्जेक्ट रे आपणकर अलगा कोड रही थाए देन सब्जेक्ट देखंतु एठारे पॉलिटिकल साइंस तो फुल मार्क आपणकर 70 एठारे 70 काहे कि ना फुल आपणकर एग्जाम होई थाए आपणकर फुल एग्जाम ही थाए आपणकर 100 मार्क रो किंतु आपणकर जोहुटा कि रही छि आपणकर 70 आपणकर एंट्रेंस मार्क प्लस 30 आपणकर रेहाउची कैरियर मार्क। तो कैरियर मार्क टी को आपणकर ऐड करा जाउची देन इक्वल टू आपणकर हे जाउची 100 मार्क। तो 100 रु आपण धर जो आपणकर 70 एवं किबा 80 एवं रखि दोचंदी तो आपणकर निश्चित भाबरे आपणकर भलो यूनिवर्सिटी रे सिलेक्शन हेबार चांसेस रहूची। भल भाव पढ़ु जहाँफल आपड़ भल मार्क सिक्योर करी आपड़ भल यूनिवर्सिटी रे सिलेक्शन हो पारे। तो आपणकर देखंतु 2020 रे जो क्वेश्चन टी आछि देखंतु क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी। तो हर आपणकर करेक्ट आंसर टी हे जिवो आपणकर ऑप्शन नंबर डी जहा कि रही छि आपणकर इट इज क्वांटिटेटिव। तो आपणकर या रही छि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी जोड़ा कि आपणकर ये जो ऑप्शन गुड़िक रही मध्यम कोटा कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी रो फीचर टी नुहे। तो आपणकर यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर डी इट इज क्वांटिटेटिव। देन आपन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। तो आपणकर यही जो रही ऑप्शन गुड़िक या मध्यरु कोटा आपणकर जहाँ रहुछि कि पोस्ट मॉडर्निज्म रो फीचर टी नुहे। तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर डी इट रिजेक्ट क्लास सॉलिडारिटी। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 deliberative democracy does not emphasis on dash। तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर ए civic culture। deliberative democracy कोटा को आपणकर एम्फोसिस दिए ना civic culture को। देन देखिए आपणकर क्वेश्चन नंबर 4 फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज promised by dash। तो आपणकर जो फेडरेशन इंडिया रही संघ तो आपणकर यह कोटा को आमर वाज प्रॉमिस्ड बाय डेस। तो आपनकर ये प्रॉमिस्ड कोटा को करथिला। तो यार करेक्ट आंसर टी जो ऑप्शन नंबर 4 रो ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 देखते हैं। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेड द वर्ड्स सेक्युलर सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी इन द प्रेम्बल। तो आपनकर जो रही आपनकर अमेंडमेंट सब रही आपनकर कोउ अमेंडमेंट रे आपनकर ऐड हेतिला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे आपनकर सेक्युलर सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी इन द प्रेम्बल आपनकर प्रेम्बल एडा ऐड हेतिला। तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर ए 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1976। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 6 द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू promulgate ordinances during recess of parliament is ancient in days। तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 123। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 7 हु ऑफ द फॉलोइंग हैज आर्ग्यूड दैट नेगेटिव फ्रीडम इज सुपीरियर टू पॉजिटिव फ्रीडम। तो किए आपनकर आर्ग्यू करथिले जहा कि नेगेटिव फ्रीडम
इज सुपीरियर टू पॉजिटिव फ्रीडम। तो यार करेक्ट आंसर डी हो ऑप्शन नंबर ए इशाए बर्लिन। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 8 हु अमंग द following said equals are to be treated equally and unequals unequally. Injustice arises when equals are treated unequally and also when unequals are treated equally. तो आपन करो यहाँ मध्यरु जो चारोटी ऑप्शन रही प्लाटो अरिस्टोटल हेगेल मार्क्स तो यहाँ मध्यरु किए कहिथिले कि equals are to be treated equally and unequals unequally. Injustice arises when equals are treated unequally and also when unequals are treated equally. तो आपनकर जो किए कहिथिले तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर बी अरिस्टोटल। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 9 मैच लिस्ट 1 with list y and select the correct answer from the course given below. तो आपन को मैच आपनकर लिस्ट 1 सहित लिस्ट 2 को आपनकर मैच करबा को कहिची करेक्टली। तो यार करेक्ट आंसर टी हो आपनकर ऑप्शन नंबर ए जोटा कि रही आपनकर ए रे आपनकर रही 2i आपनकर माइकल सैंडल होची प्रोसीड्यूरल रिपब्लिक। देन आपनकर बी रे होची जॉन रावल्स रो होची आई भेल ऑफ इग्नोरेंस। देन आपनकर सी रे हे जीवो आपनकर आई भी थॉमस पोगे आपनकर आई भी रहूची आपनकर ग्लोबल जस्टिस। देन आपनकर माइकल वाल्जर रहिबो ऑप्शन नंबर आपनकर लिस्ट रे 3i कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी। तो यार करेक्ट आंसर टी आपनकर हे जीवो। तो आपण एहा को आपनकर निश्चित भाव भलो भाव रे मन रखंतु एई भली भाव रे क्वेश्चन आपनकर निश्चित भाव रे आसबार अछि एवं एई क्वेश्चन गुडी को प्राय पिला आपनकर भूल करिथांदी आपण एई गुडी को भलो भाव रे देखंतु। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 10 हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस रूल इन इंडिया इज द कांग्रेस सिस्टम। तो आपनकर एमानक मध्यरु किए जे कि डोमेन्स ऑफ कांग्रेस रूल इंडिया इज द कांग्रेस सिस्टम कहिथिले। तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर ए रजनी कोठारी। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 11 मैच लिस्ट 1 with list y and select the correct answer from the course given below। देखो से टाइप क्वेश्चन आपनकर क्वेश्चन नंबर 9 ले आसले देन देखो 11 ले भी आसी। तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर 11 रो आपनकर हे जीवो क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए रे आपनकर कोन रही ना ए रे होची आपनकर 2i जोटा कि रहउची ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आपनकर 1998 रे आपनकर होइथिला। देन आपनकर बी रे होची बहुजन समाज पार्टी आपनकर आई 1984 रे होइथिला। देन आपनकर भारतीय जनता पार्टी आपनकर होइथिला आईवी 1980 रे 1980 रे आपनकर भारतीय जनता पार्टी होइथिला जोटा कि आपनकर बीजेपी कहूचे बिलोंग्स करचंती आपनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देन आपनकर देखियो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी देन आपनकर 3i 1999। तो यह भल भाव आपनकर मन रखंतु आपण एभली भाव क्वेश्चन आसी एमती भी आसपारे जे भारतीय जनता पार्टी आपनकर डेस मसिया रे आरंभ होइतिला। तो ए भल भाव आपनकर क्वेश्चन भी प्रायत आस्थाई। तो ए भल भाव आपण देखंतु। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 12 हु अमंग द फॉलोइंग सेड क्लास पॉलिटिक्स इन इंडिया इज मार्जिनल। तो मानक मध्य किए कहिथिले कि क्लास पॉलिटिक्स इन इंडिया इज मार्जिनल। तार करेक्ट आंसर डी हे जो ऑप्शन नंबर डी फ्रांसाइन फ्रैंकले। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 13 अकॉर्डिंग टू रॉय मार्क्रेडिस comparative politics in the past was dash। तो अकॉर्डिंग टू रॉय मार्क्रेडिस को मतरे comparative politics in the past was dash। तार करेक्ट आंसर टी हे जिवो ऑप्शन नंबर बी जहा कि रही आई 2 3i एंड आईबी जहा कि रही 2i रे आपनकर रही डेस्क्रिप्टिव 3i रे रही आपनकर फॉर्मालिस्टिक एंड लेगालिस्टिक देन आईबी रे रही आपनकर केस स्टडी ओरिएंटेड। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ एडवांस्ड कैपिटलिस्ट स्टेट। तो हर करेक्ट आंसर टी हे ऑप्शन नंबर डी इक्वल पॉलिटिकल पावर। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 15 हु सेड एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विथ गेटिंग थिंग्स डन विथ द अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। तो किए कहिथिले आपनकर एहा को। तो हर करेक्ट आंसर टी हे ऑप्शन नंबर बी लूथर गुलिक।
देन देखा क्वेश्चन नंबर 16 द थियोरी ऑफ प्रिस्मेटिक सोसाइटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन डैश तार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर सी स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हु कॉइन्ड द टर्म न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो किए आपंकर कॉइन करथिले न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टोफर होड। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया तो यहाँ मध्य कोटा आपंकर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया फीचर नुहे तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर सी कन्वर्जेंस ऑफ स्टेट एंड चर्च। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर एग्जाम्पशन ऑफ न्यू रियलिज्म तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर सी स्टेट आर मेनली इंटरेस्टेड इन एब्सोल्यूट गेन्स। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 द स्टार वार्स वाज इनिशिएटेड बाय यूएसए एज पार्ट ऑफ डैश तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर ए इट्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन आलमोंड एंड भार्वास क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर तो आपंकर या मध्य कोटा जो फॉलोइंग आपंकर ऑप्शन रही कौटा फिगर नुहे जहाँकि आलमंड एंड भार्वान क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर तो करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर सी एम्पिरिकल ओरिएंटेशन। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हु ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटेड न्यू फेडरलिज्म तो आपंकर किए इनिशिएट करथिले आपंकर फेडरलिज्म को तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर ए रोनाल्ड रिएगन। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हु सेड पब्लिक पॉलिसी इज ए purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem of matters of concern तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर डी ए एंडरसन। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हु सेड बजेट इज समथिंग मच मोर देन ए मेरे एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर तो किए कहते हैं तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर डी WF will of y। Then the question number 25 what is the full form of smart तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर सी सिंपल मोराल अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव ट्रांसपेरेंट। तो यही क्वेश्चन टी को प्राय पिला आपनकर भल करथिले तो आपण एटा को मध्य भल भाबरे मन रखिबे। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 26 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज ऑफ द हाइपर ग्लोबलिस्टिक इज करेक्ट को ऑप्शन टी आपनकर ठीक अछि जहाँकि हाइपर ग्लोबलिस्टिक रे तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर ए ग्लोबलाइजेशन इज ब्रिंगिंग अबाउट ए डिमाइज ऑफ सॉवरेन नेशन स्टेट। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 27 द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी ओरिजिनेटेड इन द रिपोर्ट ऑफ डैश तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द टर्म ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स कॉइन्ड बाय गैरेट हार्डिन तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर ए इट रेफर्स टू एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 29 हु ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट प्लेटोज रिपब्लिक इज ए ड्रामाटाइज फिलोसफी ऑफ ह्यूमन लाइफ किए कहते आपंकर प्लेटोंकर रिपब्लिक गोटे ड्रामाटाइज्ड फिलोसफी माने मनीष जीवन रे तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर डी नेटलशिप। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 30 amongst the following whose political theory is based on nominalism तो जो चारोटी ऑप्शन रही मध्य कहाँकर पॉलिटिकल थ्योरी नॉमिनलिज्म ऊपर बेस्ड अच्छी तो करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर है हॉब्स। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 31 हु अमंग द फॉलोइंग गेव द रिवोल्यूशनरी स्लोगान ऑल पावर टू द सोवियट्स एमानक मध्य आपणकर किए कहिथिले रिवोल्यूशनरी स्लोगान जहाँकि रही ऑल पावर टू द सोवियट्स तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर सी VI लेनिन।
देन देखिए क्वेश्चन नंबर 32 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। तो यार करेक्ट आंसर टी हो आपणकर ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 33 हु सेड द किंग इज ए लॉजिकल आउटकम ऑफ ए सोशल नीड किए कहते आपंकर द किंग इज ए लॉजिकल आउटकम ऑफ ए सोशल नीड। तो करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 34 इन व्हिच ईयर डिड अबुल फैजल वाज assassinated। तो आपणकर अबुल फजल को मसीह आपणकर डेथ होता assassinated मतलब डेथ। तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर ए 11 अगस्त 1602। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 35 द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी ओरिजिनेट्स विथ डैश। तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर डी रूसिया। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 36 हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट conscription is not to be regarded as an unwarranted infringement of liberty। तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर डी जेबी प्रिस्टले। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 37 which one of the following is not मेरी wollstonecraft writing। तो यहाँ मध्य कौटा गोटे रही जहाँकि मेरी wollstonecraft को द्वारा लिखित नुहे। तो करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर डी हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स सफ्रेज। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 38 हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। इंडियन रेनेसांस रो फादर बोली क्या को आम कहू या मध्य। तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर सी राजा राममोहन रॉय। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 39 नेम रेलवे स्टेशन इन साउथ अफ्रीका वेयर गांधीजी वाज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन थ्रो ही वाज ट्रैवलिंग विथ टिकेट। तो आपणकर साउथ अफ्रीका रे गांधीजी को ट्रेन रु बाहर कर देते आपणकर कौ रेलवे स्टेशन ले। तो आपणकर यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर ए मार्टिसबर्ग। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 40 इन व्हिच ईयर सावरकर वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द हिंदू महासभा। तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर सी 1937। सावरकर आपणकर हिंदू महासभा रे प्रेसिडेंट भाव में कौ मसीह इलेक्टेड होते। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 41 से भाई आप देखु मैच करने को कही मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट y एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर ए जोटा कि रही आपंकर ए रे 2i लिबराल फेमिनिज्म आपंकर इक्वाल राइट्स फॉर वुमेन एंड मेन। देन आपंकर रही बी रे आई मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म वुमेन्स ऑपरेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ क्लास सोसाइटी। देन आपंकर सी रे आई भी रेडिकल फेमिनिज्म आपंकर इश्यूज ऑफ सेपरेटिज्म एंड लेस्बियनिज्म। देन आपंकर ब्लैक फेमिनिज्म आपंकर 3i जोटा कि रही एम्फासिस ऑन रेडिकल डिफरेंसेस। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 42 हु सेड वन इज नॉट बोर्न बट रेदर बिकम्स ए वुमेन। किए कही आपणकर। तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर ए साइमन डी बिहेवियर। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 43 मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट y एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर सी जोटा कि रही आपणकर ए रे आपणकर आई बैटरी फ्राइडमैन द फेमिनिस्ट मस्टिक्यू ए कैटे माइलेट आपणकर 3i सेक्सुअल पॉलिटिक्स। देन आपणकर जर्मनी ग्रियर आपणकर 2i जोटा कि रही द फीमेल एन्यूज। देन आपणकर इभा फिक्स आईवी पेट्रिटिकल एटीट्यूड। Then question 44 arrange chronologically the formations of the following women's organizations and select the correct code given below। तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर ए जोटा कि रही
आई जोटा कि रही ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, 2I देन नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन, देन 3I नेशनल फेडरेशन ऑफ वुमेन इंडिया, देन आई भी रही कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, ऑल ऑफ द एबव। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 45, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इको फेमिनिस्ट। तो यहाँ मध्य किए आपंकर इको फेमिनिस्ट नुहति, तो यार करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बेटी फ्राइडमैन। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 46, अलेक्जेंडर कोलंटेल इज ए की फिगर इन डैश। अलेक्जेंडर कोलंटेल आपंकर की फिगर कौन आपंकर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सोशलिस्ट फेमिनिज्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ मेरी वेस्टर्नक्राफ्ट। कौन स्टेटमेंट आपंकर ट्रू नुहे जहाँकर मेरी वेस्टर्नक्राफ्ट को विरुद्ध रे। तो यार करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फीमेलनेस इज ए मोराली रिलेवेंट criterion of discrimination। Then देखिए क्वेश्चन नंबर 48, which of the following was not a part of women's movements in India। तो यार करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नवनिर्माण मूवमेंट। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 49, द गुजराती ट्रांसलेशन ऑफ द एंटो स्लैश इज कॉल्ड डैश। तो यार करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जोटा कि रही सर्वोदय। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 50, फ्रॉम व्हिच प्लेस डिड गांधी स्टार्ट द फेमस सॉल्ट मार्च ऑन 12 मार्च 1920। तो यार करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, साबरमती। तो आपंकर दांडी मार्च जोटा कि आपंकर रही सॉल्ट मार्च आपंकर गांधीजी कौट स्टार्ट करते, साबरमती लवण सत्याग्रह। तो आपणकर किसी डाउट रही है मत कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ, मु आपन को निश्चित भाव में तार रिप्लाई देवी, आपणकर अन्य किसी वीडियो बनवा को चेष्टा करी। तो आपंकर देखो नेक्स्ट 51 क्वेश्चन टी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन इज एसोसिएटेड विथ द नेम ऑफ गांधीजी। तो यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, डू और डाई, करो बा मोरो। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 52, व्हेन वाज द गांधी यूरोइन पैक्ट साइंड। तो गांधीजी यूरोइन पैक्ट को मसीह साइन करते। तो यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, मार्च 5 1931। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 53, हु कंपेयर्ड द डांडी मार्च टू नेपोलियन मार्च टू पेयर्स ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम एल्बा। तो यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 54, whom did गांधीजी nominate to lead the सत्याग्रह during the Dandi March in the event of his arrest। तो यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, अब्बास ताइबजी। देन क्वेश्चन नंबर 55, गांधीजी started सत्याग्रह in 1990 to protest against that days। तो यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, रावलात एक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 56, द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस इन इंडिया प्रपोज्ड ए फ्रेमवर्क फॉर गुड गवर्नेंस इन द फॉर्म ऑफ डेज। तो यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए, कोड ऑफ गवर्नेंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, मार्केट्स आर नॉट द नेचुरल फ्रेंड्स ऑफ पीपुल, दे हैव टू बी मेड पीपुल फ्रेंडली, हु सेड दिस। तो या किए कहते। तो यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, पीटर सेल्फ। देखिए क्वेश्चन नंबर 58, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ESCAP द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड गवर्नेंस, सिलेक्ट द करेक्ट कोर्स गिवन बिलो। यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 एंड 4 ओनली। तो जहाँ रही 1 ले आपंकर यूनिवर्सल एडल्ट पार्टिसिपेशन, 3 रे रही आपंकर ट्रांसपेरेंसी व्हाइल टेकिंग द डिसीजन, देन रही 4 रे आपंकर एडमिनिस्ट्रेशन इज रेस्पॉन्सिव टू पीपल्स डिमांड्स। Then the question number 59, the environment which has been modified by human activities is called as। तो यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, anthropogenic environment। Then the question number 60, who presides over पंचायत समिति मीटिंग। तो यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉक चेयरमैन। Then the question number 61, who elects the mayor of the municipal corporation। तो आपंकर मेयर को किए इलेक्ट करती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ले। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वोटर्स।
Then the question number 62, which one of the following is not an objective of citizens character? तार correct answer टी है option number C, the quality of public service is not assured. तो आपणकर जो रही आपणकर सबू सब्जेक्ट रे आपणकर सिलेबस देन आपणकर कोठू तार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाइबे तार मोर एक वीडियो रही 2022 पई तो मु आपनको था डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देथिबी तो आपण ताहा सहजरे जानि परिबे। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 63, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड द यूनाइटेड नेशंस एज ए वर्ड पिकासो एब्स्ट्रैक्शन। तार करेक्ट आंसर टी हिजबो ऑप्शन नंबर सी, डेग हामर्सकेजोल्ड। Then देखिए क्वेश्चन नंबर 64, which of the following UN organizations is called Parliament of Nations? तार करेक्ट आंसर टी हिजबो ऑप्शन नंबर बी, द जनरल असेंबली। तो प्राय पिला आपणकर जो माने प्लस 3 करथांती जो ग्रेजुएशन आपणकर पॉलिटिकल साइंस जो आर्ट्स रे जो रहुची सब्जेक्ट गुडिक आपणकर ओडिया रे रखि थांती, किछि पिला भी आपणकर इंग्लिश रे रखि थांती जाके इंग्लिश रे एग्जाम देई थांती। तो आपण जो माने भी ओडिया रखिथिबे तांको पई एग्जाम टी टिके कठिन रहिबो, जहाँ भी आपणकर क्वेश्चंस आसीबो आपणको बुझिया पई कठिन लागिबो। तो आपण ताहा पूर्वरु आपण सब बुक्स पढ़ंतु जोड़ा भी इंग्लिश रे रही। देन आपणकर एंट्रेंस पई आपणकर रहुची पीजी एंट्रेंस पई जो बुक्स गुडिक मु आपनको ता पई गोटे वीडियो बनै देथिबी पॉलिटिकल साइंस रे, विशेष करी आपणकर को बुक्स गुडिक आपणकर दरकारी पीजी एंट्रेंस रे आपण भलो मार्क रखि परिबे। तो आपण ताहा को ही प्रिफर करके आपण पढ़िबे तो आपण सियोर भाबरे आपण पीजी रे सिलेक्शन होई परिबे। तो आपण एबेठु ही भलो भाबरे प्रिपरेशन करंतु। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 65, हाउ मेनी गोल्स आर एनसेंट अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? तार करेक्ट आंसर टी इज ऑप्शन नंबर सी, 17। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 66, वेयर वाज द फर्स्ट यूएन पीसकीपिंग फोर्स सेंट? तार करेक्ट आंसर टी इज ऑप्शन नंबर ए, स्वेज कैनाल। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 67, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट demanding for a permanent seat in the Security Council? तार करेक्ट आंसर टी है ऑप्शन नंबर डी, मालेशिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 68, who was elected as the chairperson of the UN Special Committee on Decolonization in 2080? तो यार करेक्ट आंसर टी है ऑप्शन नंबर ए, वेल्टन अल्फोंसो वेफसन, एंटीगा एंड बारबुडा। Then देखिबा क्वेश्चन नंबर 69, once elected for a full term how many years does a judge serves in the International Court of Justice? तार करेक्ट आंसर टी हिजबो ऑप्शन नंबर बी, 9 years। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 17, the theme for UN Peacekeepers Day 2020 is dash? तार करेक्ट आंसर टी हिजबो ऑप्शन नंबर ए, women is peacekeeping a key to peace। तो यह थिला आपणकर 2020 रो 70टी आपणकर सीपीएट रो प्रीवियस क्वेश्चन विथ आंसर कीज। तो आपण वीडियोटी देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। तो मु आउथरे पुणी आपणकर एही वीडियो रे मु पुणी 2021 रो सीपीटी क्वेश्चन पेपर रो 70टी क्वेश्चंस विथ आंसर की आपणको बतौची। तो आपण ए वीडियोटी को पुणी थरे भलो भाबरे देखंतु ए वीडियो रे एवं वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखूँ जो मैंने पॉलिटिकल साइंस रे आपणकर 2022 रे पीजी पाई एंट्रेंस देवे। तो देखूँ क्वेश्चन रही 2000 देखूँ आपणकर 2021 रे जो सीपीएटी एग्जाम टी होइतिला से पुणी आपणकर किभली भाव में क्वेश्चन आसथिला। तो आपणकर 2020 ठू आपणकर 2021 रे जो सीपीएट क्वेश्चन टी आपणकर इजी आसथिला जो थी कि आपणकर पिला माने रखिथिले 80 एभव रखिथिले जो माने भी आपणकर रेभेन्सा बाणिज्य सीट पाइचंती। देन आपणकर 2020 रे आपणकर टिके हार्ड क्वेश्चन आस्थिपुरु पिला मानकर आपणकर जो माने 50 एभव रखिचंती तांकर रेभेन्सा बाणिज्य सिलेक्शन होइतिला। तो आपणकर 2022 रे को टाइप रो क्वेश्चंस आसीबो सेटा भी आपणको हमकु जणा नाही। तो आपण एबेठु ही भलो भाबरे प्रैक्टिस करंतु हार्ड किबा इजी आसु तो आपणको भलो मार्क ही रखिबार अछि। तो देखो तो आपणकर 2021 रे आपणकर को टाइप रो क्वेश्चन आस्थिला। तो आपणकर क्वेश्चन नंबर 1 ले देखंतु, which statement is this? Whoever you are or want to be, you may not be interested in politics, but politics is interested in you. तो यह किए कही तो यार करेक्ट आंसर टी जो ऑप्शन नंबर ए, मैसेल हार्वर्ड बोर्डमैन। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
In whose opinion the process of allocation of the scarce resources is called politics, and he used the words who gets what, when, how. तार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर बी H.D. Laswell. Then the question number 3. Wherever state exists, there is politics, but the converse is not true, that wherever politics exists, so that state. Whose description is this? तो यार कहाँ कर description? तो यार correct answer टी हो ऑप्शन नंबर ए Lipson. Then देखिए question number 4. The government of India Act 1919 is also known as dash. तो यार correct answer टी हो ऑप्शन नंबर सी The Montego Transport Reforms. Then देखिए question number 5. Who introduced an objective resolution of the Constitution on December 13, 1947? तो यार correct answer टी हो ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू. Then देखिए question number 6. Who is known as the father of local self government in India? तो यार correct answer टी हो ऑप्शन नंबर ए Lord Ripon. Then देखिए question number 7. Whose entailment theory of justice opposes to the redistribution of resources by the state for any purpose? तो यार correct answer टी हो ऑप्शन नंबर बी जहाँ कि रही रॉबर्ट नाजिक. देन देखिए क्वेश्चन नंबर 8. हु सेड इनजस्टिस एराइजेस व्हेन इक्वल्स आर ट्रीटेड अनइक्वाली? देखो ये क्वेश्चन टी आपणकर पड़ी आपंकर 2020 और 2021 पड़ी. देखो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर डी अरिस्टोटल. देन देखिए क्वेश्चन नंबर 9. The classification of human action as self regarding and other regarding was made by 1. H.G. Garden, 2. Hume, 3. James Mill, 4. J.S. Mill. Select the correct answer using the course given below. तो correct answer टी हो ऑप्शन नंबर सी जोटा रही ओनली 4 J.S. Mill. Then देखिए question number 10. If a party wins 2% of seats in the Lok Sabha from at least 3 different states, it is recognized as dash. तो आपनकर केउ पटिबा पर गणित हेबो. तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर ए नेशनल पार्टी. देन देखिए क्वेश्चन नंबर 11. In which year the parliament passed the 42nd amendment act for checking the practice of political defections? तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर बी 1985. देन देखिए क्वेश्चन नंबर 12. In 1938, when the Union government tried to establish Hindi as national language, the anti-Hindi movement was started in Tamil Nadu under the leadership of Desh. तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर सी प्रियर वी रामस्वामी. देन देखिए क्वेश्चन नंबर 13. Who pointed out the 2 important trends in caste in India? A. The process of Sanskritization and B. Westernization. तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर डी M.N. Srinivasa. Then the question number 14. In 1989, who was the Prime Minister of India to implement the recommendations of the Mandal Commission for reservation of jobs for the OBCs in the public sector? तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर बी जोटा कि रही विश्वनाथ प्रताप सिंह. देन देखिए क्वेश्चन नंबर 15. Which branch of political science compares the features, advantages, disadvantages, merits, demerits, similarities and dissimilarities of political institutions in order to determine the best of political institutions? तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर डी comparative government. Then देखिए क्वेश्चन नंबर 16. Which approach is concerned with the study of the formal political structures like legislative, executive and judiciary? तो करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर ए इंस्टीट्यूशनल अप्रोच. देन देखिए क्वेश्चन नंबर 17. Whose political communication approach lays emphasis on that one part of the system affects another by sending messages or transmitting information? तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर बी कार्ल ड्वेच. देन देखिए क्वेश्चन नंबर 18. Who is an advocate of the structural functional approach? तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर सी
Gabriel Almond. Then देखिए question number 19, who is generally regarded as the father of scientific management theory in public administration. तो किए तो यार करेक्ट आंसर टी जो ऑप्शन नंबर बी फ्रेडरिक विंस्टन ट्रेलर. देन देखिए क्वेश्चन नंबर 20, who wrote the book towards a new public administration, the Minor book perspective. तो यार करेक्ट आंसर टी जो ऑप्शन नंबर ए फ्रैंक मैरिनी. देन देखिए क्वेश्चन नंबर 21, which theory in international relations is advocated by E.H. Carr, George Kennan, Reinhold Niebuhr and H.J. Morgenthau. तो करेक्ट आंसर टी जो ऑप्शन नंबर सी क्लासिकल रियलिज्म. Then the question number 22, politics is governed by objectives laws which have roots in human nature is principles, hence J. Morgenthau realism theory. The correct answer is option number B first. Question number 23, neorealist theory was propounded by in his book Theory of International Politics. The correct answer is option number D, Kenneth and Waltz. Then the question number 24, the concept of political dress is that it is a set of attitude, beliefs and orientations of the people towards the political system. So the correct answer is option number A, culture. Then the question number 25, which approach takes into account the norms and informal practices that shape the functioning and evolution of institutions in various ways. So the correct answer is option number B, neo-institutional. Then the question number 26, the voting method is one in which voters indicate on a ballot the candidates of their choice and the candidate who received the most voters is known as dash. The correct answer is option number C, first past the post. Then the question number 27, who defined policy as the output of the political system and public policy as the authoritative allocation of values for the whole society. The correct answer is option number A, David Easton. Then देखिए question number 28, who famously said public policy is whatever a government chose to do or even not to do. The correct answer is option number A, Thomas Dye. Then the question number 29, which public policy renders goods and services and also distribute their costs among those members. The correct answer is option number B, distributive policy. Then the question number 30, what involves technological, economical, political and cultural exchanges among the nations. So the correct answer is option number D, globalization, jagatikkarana. Then the question number 31, the nuclear non-proliferation treaty NPT was concluded on July 1st dash. तो यार क्यों मुझसे रे तो यार correct answer is option number B, 1968. Then the question number 32, the idea of Rajadharma is mentioned in dash. तो यार correct answer is option number A, शांति पर्व of the Mahabharata. Then the question number 33, Fateh-e-Jahangiri is a work of dash. तो यार के लिखिଛନ୍ତି तो यार correct answer is option number A, Ziauddin Borani. Then the question number 34, whose foreign policy offers the theory that an immediate neighboring state is an enemy and a neighbor's neighbor separated from oneself by the intervening enemy is a friend. तो यार correct answer is option number B, Kautilya's Saptanga theory. Then the question number 35, Rousseau felt that social living corrupted us, leading to such ills as private property and social of the following is his famous phrase arising from this reasoning. So correct answer is option number D, man was born free but he is everywhere in chains. Then the question number 36, it is better to be human being dissatisfied than a pig, better to Socrates dissatisfied than a fool satisfied. Who said? तो किए कहते तार correct answer is option number A, J.S. Mill. Then देखिए question number 37, the high caste Hindu woman is written by dash. तो यह किए लिखिଥିଲେ तार तो यार correct answer is option number C, Pandit Ramabai. Then देखिए question number 38, in which year Swami Vivekananda gave the famous speech in the World's Parliament of Religion in Chicago. तो यार correct answer is option number D, 1893. Then the question number 39,
हिंदी तो इज द इम्पोर्टाट वर्क ऑफ डैश तो ये किए लिखी तो करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर डी बी.डी. सावरकर। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 40 द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर पिलर स्टेट वाज एडवोकेटेड बाय डैश तो ये करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर ए राममोहन लोहिया। Then the question number 41 in which year women were granted the right to vote by the US Constitution the correct answer is option number D 1921. Then the question number 42 Mary Wollstonecraft which book was the first state of modern feminism that campaigned for women's right to vote or female suffrage so the correct answer is option number D Vindication of the Rights of Women. Then the question number 43 John Stuart Mill with Harriet Taylor wrote a book that proposed political rights and liberties of women equal to men. The correct answer is option number D, the subjection of women. Then the question number 44. Which book of Betty Friedman marked the resurgence of liberal feminist thought in the 19th century during the second wave feminism? The correct answer is option number A, the feminine mastique. Then the question number 45 Mary Wollstonecraft, John Stuart Mill and Harriet Taylor Mill were dash feminists. The correct answer is option number A liberal feminist. Then the question number 46 which book of Simon de Beauvoir drew attention to the personal, psychological and sexual aspect of female oppression? The correct answer is option number C the second sex. Then the question number 74 who is the Indian feminist author wrote Staying Alive in 1988 that helped redefining the perceptions of third world women? The correct answer is option number C Vandana Shiva. Then the question number 48 according to Margaret Benstone and Peggy Matton in the capitalist system two types of labor exist and these are dash. The correct answer is option number A productive and reproductive. Then the question number 49 who was the Kenyan eco-feminist and recipient of Nobel Peace Prize in 2004 set up the Green Belt movement in Kenya in 1977? The correct answer is option number B Wangari Maathai. Then the question number 50 the process of decision making is the process by which decisions are implemented or not implemented is known as dash. So the correct answer is option number A governance. Question number 51 who defined governance is the manner in which power is exercised in the management of a country economic and social resources for government. The correct answer is option number C World Bank. Then question number 52 dash refers to application of information and communication technology for delivering government services, exchange of information, communication, transaction, integration of various systems. The correct answer is option number C e-governance. Then question number 53 which commission in 1987 defined sustainable development and development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs? Correct answer is option number C Brundtland Commission. Then देखिए question number 54 the measure of life expectancy, literacy, education and standard of living for countries worldwide is known as dash. The correct answer is option number D Human Development Index. Then the question number 55 which committee recommended for the introduction of Panchayat Raj system in India? The correct answer is option number C Balwant Rai Mehta committee. Then the question number 56 a document that an organization publishes for public reference and which provides details about the nature, working and function of the organization is known as dash. The correct answer is option number A citizen character. Then the question number 57 the Right to Information Act came into force on 12th October dash. The correct answer is option number C 2005. Then the question number 58 dash is the
This is a management concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and interactions with their stakeholders. तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर बी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. देन देखा क्वेश्चन नंबर 59. गांधीजी wanted a suitable term to name his new technique of resistance satyagraha and gave an advertisement in the following magazine for suggestion days. तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर बी इंडियन ओपिनियन. Then देखा क्वेश्चन नंबर 60. According to Gandhiji is a moral weapon, a passive resistance and a political weapon. तार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर सी नॉन वायलेंस. देन देखिए क्वेश्चन नंबर 61. In the technique of satyagraha, the term implies voluntary exile from one's permanent place of habitation. तार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर डी हिजारत. Then देखिए क्वेश्चन नंबर 62. Who started the American civil rights movement inspired by the Gandhian idea of ahimsa and satyagraha. तार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर बी मार्टिन लूथर किंग जूनियर. देन देखिए क्वेश्चन नंबर 63. Who gave this famous message, the earth has enough resources for our need but not for our greed, to save this earth from the environmental disaster. तार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी. यही मेसेज टी किए कही महात्मा गांधी. देन देखिए क्वेश्चन नंबर 64. हॉलीवुड डायरेक्टर डेस मेड ए फिल्म टाइटल गांधी इन 1982. तार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर सी रिचर्ड एंटनबर्ग. देन देखिए क्वेश्चन नंबर 65. Gandhiji is the story of my experiment with truth was originally written in Gujarati. Who translated it into English? तार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर बी महादेव देसाई. देन देखिए क्वेश्चन नंबर 66. Who are the permanent members of the UN Security Council? तार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही फ्रांस रूसिया यूएसए ब्रिटेन एंड चाइना. देन देखिए क्वेश्चन नंबर 67. How many official languages does the United Nations have? तो केतोटी आपनकर ऑफिशियल लैंग्वेज रही. तो करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर बी 6टी. देन देखिए क्वेश्चन नंबर 68. How many non-permanent members are there in the Security Council? तो करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर ए 10. देन देखिए क्वेश्चन नंबर 69. Which organ of the UN functions from peace place in the Hague, the Netherlands? तो करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर डी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. देन देखिए क्वेश्चन नंबर 70. The United Nations agency concerned with the improvement of standards of education and strengthening international cooperation in this field is dash. तो करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रोची यूनेस्को. तो यह थिला आपणकर 70टी क्वेश्चंस आपणकर 2020 सीपीईटी रो पॉलिटिकल साइंस रो. देन आपणकर सीपीईटी 2021 रो पॉलिटिकल साइंस रो. तो आपण ये भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि बहुत बहुत धन्यवाद. एवं भिडियोटी भल लगी आपण लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलें और अधिक 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 मात्रा आपणकर सांग मानक शेयर करूँ जो मैंने भी आपणकर 2022 रो सीपीईटी रे पार्टिसिपेट करने को चाहते.